नमस्ते, मैं अतुल कुमार अग्रवाल जमशेदपुर से हूँ। मैं यहाँ नारायणा में अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, जिसका नाम है अद्विका अग्रवाल। वो 4.5 साल की है। 25 अगस्त को हम उसको एडमिट किए थे, जहाँ पर उससे पहले 10-15 दिन पहले से उसको थोड़ा बुखार था। डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे चल रहा था। उस पर ठीक नहीं होने पे उस पर कुछ चेंजेस आने लगा, तो उसको देखते हुए हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ 3 दिन के बाद उसमें सिम्टम्स देखे, जो कि मॉर्निंग में एक नाइट पे उसने सोया 28 अगस्त को। उसके बाद वो 29 को कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसके आईज मूवमेंट था, सब कुछ था, बट शी वाज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। तो वहाँ पर डॉक्टर का सजेशन था, शी हैज गॉट सम सीवियर डिजीज बट दे आर नॉट एबल टू मेक आउट कि कौन सा डिजीज था। उनका सजेशन था वी कैन टेक अ सेकेंड ओपिनियन एंड वी कैन मूव ऑन to some other places. So we decided the fastest and the best place to move from Jamshedpur is Kolkata. So we moved to Kolkata on 29th of August and we have admitted her in some hospital in Kolkata. There the treatment was started and we saw her from that condition to most deplorable condition a parent can see his child. मैंने समझ लीजिए कि वेंटिलेटर्स में भी उनका जो कंडीशन था, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम माय आईज। वहाँ पर करते करते हमारा 20 डेज पार हो गया, 21 डेज। उसके बाद फिर अचानक से निलोय सर का हमें किसी ने बताया। निलोय सर को पर्सनल रिक्वेस्ट पे हमने वहाँ विजिट करवाया। निलोय सर देखने के बाद निलोय सर का कुछ पॉजिटिव व्यू आया, जो कि हमको लगा कि अभी हमारे बेटी को बचाने के लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। निलोय सर देखने के बाद उन्होंने सजेशन दिया कि वी कैन ट्रांसफर हर टू नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा। वो अपने पर्सनल गाइडेंस में उसको रखना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। उनके सजेशन पे हम उसको 17 सितंबर को वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट किया गया। आते ही उन्होंने फर्स्ट कंडीशन ये रखा कि इनका सीटी किया जाए। सीटी से इनका एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या कंडीशन है ब्रेन का, उसके हिसाब से ये डिसीजन लेना चाह रहे थे। सीटी करने के बाद सर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराया, उसका थोड़ा सा रिहैब करवाए। आफ्टर 2.5 hours वी गॉट अ मैसेज कि सर वांट टू डू द ओटी ऑन द सेम डे ओनली। वी ऑलवेज शॉक्ड, इवन माय फैमिली मेंबर्स आर आल्सो शॉक्ड कि लास्ट 20 डेज में सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उस वहाँ पर निलोय बिस्वास सर ने अपने रिस्क पे उसको ओटी करने का ये कोशिश किया, जिससे हमारी बेटी का ओटी होते ही ईबीडी प्रोसेस एक होता है ब्रेन में, जिससे कि पानी निकालने का कुछ प्रोसेस होता है, जिससे कि ब्रेन का जो है पानी निकाला जाता है। सर ने बहुत अपने एक्सपीरियंस के साथ फर्स्ट डे में 20 ml, सेकेंड डे में 50 ml, थर्ड डे में 100 ml करते लास्ट में सर ने 500 ml तक 600 ml तक निकाला। उसके बाद जब सर को लगा कि जो अपने ब्रेन का प्रेशर है वो काफी कम हो गया है, फिर सर ने उसको करते हुए उस पे संट का प्रोसेस चालू किया, जिससे कि संट लगा देंगे। तो सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि संट लगा देने से परमानेंट प्रोसेस है, जिससे कि आपको रोज बाहर से ड्रेन आउट करने की जगह ऑटोमेटिक वो ब्रेन में ड्रेन आउट होने चला जाएगा। इस बीच में सुबोधीप सर, जो कि पेडियाट्रिक देख रहे थे, उन्होंने भी काफी हेल्प किया। उन्होंने हर बैक्टीरियल, हर इन्फेक्शंस और हर चीज की रिपोर्ट हमें रेगुलर बेसिस में बताया और उसका भी गो थ्रू करके हमें हर चीज से बताते गए और उन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, जो कि हमारी बेटी को जान बचाने के लिए काफी अच्छे थे। उन्होंने दोनों सर ने बहुत मेहनत करके आज हमारी बेटी का जान बचा लिया, जबकि 120% तक सब डॉक्टर ने नेगेटिव बताया था। जमशेदपुर से लेके कोलकाता से लेके मैंने इंडिया के कोई भी डॉक्टर से इसका रिव्यू लिया, सब ने बताया था कि इसका भी कुछ भी नहीं हो सकता है। बट सर ने पहला यही कंडीशन रखा कि फर्स्ट वी विल सेव हर लाइफ, देन वी कैन सी दैट अदर थिंग्स कैन बी वर्केबल और नॉट। तो सर ने हमारी बेटी का जान बचा दिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। इससे करते करते सर आज हम उसको स्टेबल पोजीशन में लिया है। जो वेंटिलेटर में थी, लास्ट 1 महीने तक वेंटिलेटर में रहने के बाद उसे सर नॉर्मल ऑक्सीजन में लाते हुए आज उसको बिना ऑक्सीजन के हम लोग लेके रखे हुए हैं और घर पे ले गए, डिस्चार्ज करा लिए, जिससे कि उसे काफी अच्छा लग रहा है। अब वो रिकवर कर रही है, स्लो एंड स्टेडी बहुत रिकवर कर ली है और काफी हद तक सर का ये कहना है कि वो रिकवर कर जाएगी, बिकॉज सी इज ओनली 4.5 years, सी विल बी रिकवरिंग एंड एज के हिसाब से सब कुछ हील हो जाएगा।
ये मेरे तरफ से और मेरे फैमिली के तरफ से निलोय विश्वास सर और उनकी टीम को और सुबोधीप सर और उनकी टीम को काफ़ी धन्यवाद है, काफ़ी थैंक्स है हमारे फैमिली मेंबर्स और मेरे तरफ से खास करके और मेरी वाइफ की तरफ से कि मेरी बेटी का जान बचाने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट माने। आज सब कोई नेगेटिव होते हुए निलोय सर ने पॉजिटिव साइंस दे के हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए माने चैलेंजिंग वक्त में भी काफ़ी सपोर्ट करके हमें बेटी का लाइफ सेव कर दिया। So today I am here to speak about a small child, 5-year-old Adhvika Agarwal, who was admitted with us in the middle of September. So this child came from a different state, the state of Jharkhand, and what she was suffering from was tubercular meningitis. So tuberculosis of the brain is what tubercular meningitis is, and it's a very deadly disease and it has several stages. The child presented in a stage 4 disease, which happens to be the most advanced form of tubercular meningitis, which carries a lot of risk of death, a lot of risk of morbidity, and usually patients present with a comatose state. Patients they have a lot of fits and they do not wake up, and this is the typical state that the child presented in. Initially, when she came from Jharkhand, she was admitted in another hospital of our city, and she was there for almost 2.5 weeks. However, despite the team's trial in the other hospital, despite all their good efforts, the child, for understandable reasons, was not responding a lot, and this is typically what we expect in the first few weeks, first several weeks of a tubercular meningitis. They do not respond that easily. So the child was shifted to us, as I said, in September, and initially she presented in a completely comatose state on ventilator with multiple infections, because she was already in an ICU for almost 2.5 weeks. So she had acquired other hospital acquired infections also, and her infection markers were very high. So our team, which comprised me as the pediatric intensivist, along with Dr. Niloy Biswas, who is the neurosurgeon in our center. So both of us, we formed a team and we started treatment. Along with that, all throughout her stay, Dr. Rasika Deshmukh, who is an infectious disease specialist and microbiologist at our hospital, she gave very valuable inputs, along with other members of the team like our neurologist Dr. Chinjan Ghosh, and the other team members comprised relentless efforts from our physiotherapists and the nurses. So we initiated treatment. The child had a lot of infections, as we said, and with all the supportive treatment, the child over the next 10 days started to show some response. The infections were getting under control, it seemed. She had multiple infections. Now at that point of time, we had a team discussion amongst ourselves, and we thought that we had nothing to lose, but the child was not responding much neurologically, so we would do something to reduce the pressure of the brain. So Dr. Niloy Biswas and his team, what they did, they put something called EVD, or external ventricular drain, where you essentially drain the fluid inside the brain externally with a hope that the brain pressure would reduce. So with this procedure, the child started to show some response. This procedure would have been very, very risky in the initial part of hospital admission, because the child had several infections at that point of time. So the chances of those infections flaring up after a surgery would have been much greater than when the surgery was done at this point, when the infections were much under control. So now that after this procedure the child was responding neurologically better, then we thought that we would go and do a second procedure. So Dr. Niloy Biswas did a second procedure, which was essentially called ventriculo-peritoneal shunt, where you essentially drain the fluid of the brain, but not externally, but inside your body cavity, that is inside your abdomen. So with these two procedures and with all the supportive treatment, the child showed a lot of response, and over the next 1 month, what I would say, the child, the state she presented in, almost showed kind of 40 to 50% response. She was requiring less oxygen support, her infections were down, and we were able to take her off ventilator. However, a lot of supportive therapy was going in from the physiotherapists, from the nurses. So in these sort of patients, it's not only important to provide them with good clinical care, but
the role of dietitians, the role of physiotherapists, the role of nurses who help in rehabilitation of the patients, who help the patients gain muscle strength, help the patients gain weight. Those things play a lot of important role. So with all the due efforts, over the next 1.5 months, the child made a lot of progress, to the point that we initiated discussion with the family that now is the time. We think that she is not going to benefit anymore from staying in the hospital, but we should rather discharge her home, where supportive treatment, physiotherapy, etc. should continue, and with that the child may show further progress. So 2 weeks ago we were able to discharge the child, and the parents are already set up everything in their home, including nursing care, including physiotherapy. And 2 days ago she came to us in the OPD, and it was very heartening to see that the child had made even more progress since the time she was discharged. And it's the parents' belief that they think that now when they call her by name, the child is showing some response. So overall, as I said, tubercular meningitis is a deadly disease. It's not always preventable. Despite taking BCG vaccine, it's not always preventable, but it has got very, very poor outcome. So this is a very heartening case of a brave child who fought throughout the hospital stay. And although we did a lot of teamwork for her, but over and above, I think it was her fight, it was her willpower, because of which she was able to go home. So this is a great story of success, a success not only from the medical team, from the nursing team, from the physiotherapy team, but it's the success of the child. Thank you.